ओ ओ ठीक अछि ला जय जगन्नाथ जय श्री राम। तो आज आम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2 डिस्कशन करवा एंड सॉरी टिके लेट हो गला 6 टाइम टाइमिंग थिला बट ड्यू टू द टेक्निकल इशू आई एम ऑलरेडी लेट सो चलो ठीक अछि चलो स्टार्ट करिया हमें दैट इज पिला जल्दी जल्दी जॉइन हेतु देन इमीडिएटली स्टार्ट करिवा। गुड इवनिंग एवरीवन। कार्तिक लाइफस्टाइल पवित्र एंड नेहा प्रधान। ओके तो स्टार्ट करिया हमें जल्दी जल्दी जॉइन हो। जय जगन्नाथ। ओके अरे एती पिला कोन आउ से पिला कोड़े गले human being touches to the other human ऑडियो एंड वीडियो तुमको क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल को देन हम इमीडिएटली स्टार्ट करिवा। वॉइस ऑफ कृष्णा अर्पिता पवित्रा पवित्र कार्तिक गुड इवनिंग यस 23 वाचिंग ओनली अरे यार 28 एमडी कौसर लेट्स स्टार्ट सर अभिस्मिता स्नेहामयी अंकिता सोनालिसा ओके आमे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आई थिंक प्रीवियस क्लास तुम सब अटेंड करथियो तो ये पार्ट 2 रे हमें जो स्टार्ट करथिला आई थिंक आरबीसी हमें कंप्लीट कर सारथिले सो दैट डब्ल्यूबीसी रे स्टार्ट करिया। तो चलो तो देखियो हमें डब्ल्यूबीसी अच्छा ता पूर्व मु किछरा क्वेश्चन पचारछि मते फर्स्ट को व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी केते 120 days 110 days 100 days 25 days 125 days 120 days yes ग्रेवहेड ऑफ आरबीसी ग्रेवहेड ऑफ आरबीसी बा हम जदी कहबा कब्रस्थान आरबीसी रो कब्रस्थान कोटा ग्रेवहेड ऑफ आरबीसी ग्रेवहेड ऑफ आरबीसी कोटा graveyard of RC that is spleen. Okay. Next question. Plasma without the clotting factor. That means if you remove the clotting factor from the plasma, it is called as plasma without the clotting factor. Or if you remove the clotting factor or fibrinogen from the plasma, it is called as serum. Okay. That is fibrinogen, which is important for the blood clotting, and it is present in the blood in an active form or in an inactive form. What will be your answer? Fibrinogen present in the blood in an active form or in an inactive form? Konabo, it is present in the blood in an inactive form. Okay, what is the active form of fibrinogen? Who can say? What is the active form of fibrinogen? Fibrinogen ro active form kono? And the answer is fibrin or fibrin, whatever you can say. Then how much percentage of plasma is protein? Plasma रे केते परसेंट प्रोटीन 6 to 8%, 7 to 8%, 8 to 10%. How much percentage of plasma is protein? Plasma रे केते परसेंट प्रोटीन? कार्तिक लाइफस्टाइल again I am saying the question, how much percentage of plasma is protein? Plasma रे केते परसेंट होची प्रोटीन 6 to 8%, 90 to 92%, केते परसेंट 6 to 8%. Okay, what is the function of the protein albumin? Who can say what is the function of albumin? Albumin रो function कोन? What is the function of albumin or what is the function of albumin protein in the plasma? The function of fibrinogen is clotting and coagulation, and the function of globulin is defense mechanism, and the function of albumin is osmotic balance. So you have to remember these three proteins and what are the functions of these proteins. मन रखिया नियति दरकार. Next जीवा हमें WBC.
ओके WBC otherwise called as leukocyte. ओके जस्ट गोटे कथा मन पड़े से विषय पचार दवा आम जाने प्लेन डोइलर और इफ समवन इज गोइंग टू प्लेन एरिया टू पोलर एरिया जदि जड़े प्लेन एरिया टू पोलर एरिया को जाऊँगी तो आरबीसी नंबर विल इंक्रीज और आरबीसी साइज विल इंक्रीज जिते जड़े प्लेन एरिया रू पोलर एरिया को जीव से तार आरबीसी नंबर इंक्रीज हुए 3 मास पर ना आरबीसी साइज इंक्रीज हुए आरबीसी नंबर इंक्रीज अंकिता एमडी को सर परफेक्ट नेक्स्ट चलो leukocyte leukocyte is otherwise called as WBC and as we know that RBC रो lifespan that is 120 days and RBC रे nucleus is absent and hemoglobin is present but जदि हमें WBC कथा देखिया WBC is otherwise called as white blood cell and they are colorless most important WBC is colorless due to the lack of hemoglobin and hemoglobin is a copper containing complex protein or iron containing complex protein who can say hemoglobin is a iron containing complex protein or a copper containing complex protein hemoglobin is iron containing complex protein perfect so WBC टा होची colorless due to the lack of hemoglobin and जेमती हमें देखी छे RBC रे nucleus absent था or we can say that in mature RBC the nucleus is absent and due to the absence of nucleus in mature RBC there is no electron transport chain as well as Krebs cycle in the RBC so only source media of ATP production is glycolysis most important kotha ame janiche Krebs cycle occurs in the matrix of mitochondria and electron transport chain also occurs in the inner membrane of mitochondria but RBC रे nucleus न थाए and also mitochondria भी न थाए so that RBC रे केवल glycolysis हुए but WBC रे nucleus थाए and a relatively less number in average human beings तो नियत रूप रे हमें मन अछि RBC रो काउंट जदि करबा गोटे हेल्दी इंडिविजुअल केते 5 to 5.5 million per millimeter cube whereas WBC average केते 6000 to 8000 millimeter per millimeter cube मान रखियो and generally short lived who can say what is the lifespan of a WBC what is the lifespan of WBC रो lifespan कोन RBC रो 120 days WBC lifespan को WBC रो 10 to 12 days okay 10 to 12 days हम कहि परबा approximately ठीक हे परिबो 10 to 12 days but जदि गूगल देखिबो that is 12 to 20 days तो हम कहि परबा से approximately below 20 days बोली कहि परबा okay then जिबा हमें कोन मोस्ट इंपोर्टेंट WBC को दीटा कैटेगरी रे डिवाइड कराइछि one is granulocytes and another one is agranulocytes granulocytes कोन agranulocytes कोन बा जदि हमें कहिया WBC रो जो दीटा पार्ट रे ग्रानुलोसाइट्स agranulocytes मतलब कि जदि हमें ताकरू माइक्रोस्कोप अंडर देखिबा ता भीतर छोट छोट ग्रान्यूल लाइक अपीयरेंस आर प्रेजेंट और छोट छोट दाना भलिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट सो दैट इट इज कॉल्ड एज granulocytes एंड मन रखिबो WBC को टू टाइप्स रे डिवाइड करा गला granulocytes and agranulocytes A for agranulocytes G for granulocytes and granulocytes रे neutrophils eosinophils basophils neutrophils eosinophils basophils and agranulocytes रे that is lymphocyte and monocyte most important neutrophils eosinophils basophils are under the granulocytes eosinophils and basophils neutrophils eosinophils basophils are under the granulocytes and lymphocyte monocyte होची agranulocytes under रे बुझी होची ना बुझी होनी ना आउटिके स्लो कहया ना आउटिके स्पीड कहया ना ए लेवल रे ही जिबा एंड काई कलो ग्रानुलोसाइट को जदि हमें न्यूट्रोफिल्स को नेकी जूम करी देखिबा ता भीतर छोट छोट एबरा दाना वाला ग्रानुल लाइक अपीयरेंस पाइया सो दैट आको हमें ग्रानुलोसाइट्स बोली कहूचे बट जदि हमें लिम्फोसाइट को देखिया ता भीतर कोनोसी ग्रानुल बा दाना वाला स्ट्रक्चर पाइयानी सो इट इज कॉल्ड एज agranulocytes बुझी होची ओके स्नेहमयी एमडी को सर ठीक अछि एंड मन रखिबो दैट इज मन रखिबो एमानकर ऑर्डर कोउटा मैक्सिमम मिले WBC रे जदि हमें देखिबा न्यूट्रोफिल्स इज द मोस्ट अबंडेंट 60 ରୁ 65 तो मु आकर ऑर्डर ता तुमको सजाई के लिखि दउची दैट इज ऑर्डर मन रखिबो एक्सेस देखा जो न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट मोनोसाइट एसिनोफिल्स बासोफिल्स न्यूट्रोफिल्स 60 ରୁ 65 देखियो बासोफिल्स ता पूरा कम थिबो
that is eosinophils 2 ରୁ 3%, basophils 0.5 ରୁ 1%। এইଭଳିଆ অর্ডরটা ମୁଁ କହି ଦଉଛି ତମକୁ। ফার্স্ট হচ্ছে ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଦେନ୍ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ଦେନ୍ ମୋନୋସାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଏସିନୋଫିଲ୍ସ, ଦେନ୍ ବାସୋଫିଲ୍ସ। एंड तुमने फिजिक्स रे गोटे जानिथिबो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सो दैट एई ऑर्डर रे मन रख, एन फॉर न्यूटन्स, एल फॉर लॉ, एम फॉर मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ईबी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ईबी एई बडा मन रख। न्यूट्रोफिल्स, देन एसिनोफिल्स, देन बासोफिल्स, देन न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन एसिनोफिल्स, देन बासोफिल्स। नी तो छाड़ीनी। So NLM EB, Newton's law of motion EB. Hela, what is the first law of Newton? Who can say? What is the first law of Newton? Newton को first law की कही परियो? Then second law को जिया, then third law को जिया। What is the first law of Newton? तो फर्स्ट लॉ कौन? लॉज ऑफ इनर्शिया। यस, लॉज ऑफ इनर्शिया कौन? दैट इज एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द रेस्ट पोजीशन until only there is an external force। बा जदि किए स्थिर रहउथिबो तो स्थिर रहया को पसंद करिवो, एंड जदि किए मूवमेंट करूची सो दैट से भी मूव करिया पे पसंद करिवो until unless there is an external force। बा जदि बिना कोन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होबा पर्यंत तो से सेम पोजीशन रे ट्राई करिवो। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। एंड द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, an object, sorry, पायल रो देछि कोन? पायल, an object at rest remains at rest, or if an motion remains in the motion at a constant velocity unless acted on by the external force। Perfect। And second law is F equal to ma, that is हम जानिछे change in momentum is directly proportional to like this, F equal to ma। and third law is that is every action there is an equal and opposite reaction, already तुम जानिछो। so that सही order रे मन रखो। first one is neutrophils, Newton's law of motion EB। so order maximum देखा जाए neutrophils, जोटा कि most abundant clearly mention करा हिची हैला। एंड होची कोन ना सबुठारो लास्ट होची 0.5 रो 1। याको मन रखियो यार, नीट रे एगुडा पचारे न्यूट्रोफिल्स केते परसेंट बोली डायरेक्टली मन रखो 60 टू 65, बासोफिल्स होची 0.5 रो 1। हाँ, आ तापर हम मन रखिया एमानकर काम सब कोन। फर्स्ट तो क्वेश्चन पचारियो डब्ल्यूबीसी कलरफुल ना कलरलेस ए सब पचाले आसीबो। डब्ल्यूबीसी को कैटेगरी डिवाइड करे छी से पचाले भी आसीबो। देन होची हमको पचारिबो दैट इज ग्रानुलोसाइट्स ऑर्डर रे की आसीबो, एग्रानुलोसाइट्स ऑर्डर रे की आसीबो। देन मोस्ट इंपोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज व्हाट इज द फंक्शन। मन रखिबो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट होची 6 टू 8%। मु तुम सजै के ऑलरेडी कहि देछि। न्यूट्रोफिल 6 टू 65, देन लिम्फोसाइट केते, देन मोनोसाइट होची 6 टू 8, देन एसिनोफिल्स होची 2 टू 3, देन बासोफिल्स होची 0.5 टू 1। सो दैट तुमको खाली ओवरलुक करियो, परसेंटेज मन रखियो, बट मु कहि दिछि कहा पर को परसेंट। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट रा काम होची फागोसाइटिक सेल। स्ट्रिक्टली मन रखियो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट यार काम होची कोन ना फागोसाइटिक सेल। Phagocytic cell, for example, if the foreign particle will enter to the cell, पायल yes MCQ होबो every class we will teach some of the theory, then after we will discuss about the MCQ। so एमते नाही कि directly MCQ but theory and MCQ जेति कि पढिया तार MCQ करिया। so neutrophils monocyte रो phagocytic, and समस्त जानिचो phagocytic रो मीनिंग होची कोन? that is when the foreign particle enter to the cells it will destroy the cells or it will डायरेक्टली गिलिबो। तो दैट इज हमें कहि पेरे गोटे टाइप रो एंटीबॉडी वाला काम करछे फागोसाइटिक सेल व्हिच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। जो माने फॉरेन एंट्री ऑर्गेनिज्म बॉडी भीतर एंट्री करछि, सो दैट आको डिस्ट्रॉय करियार काम कहारो हमरो न्यूट्रोफिल्स आ मोनोसाइट रो। क्लियरली मन रखियो, सो दैट जदि हम जेमति कि जानिचे आरबीसी रो काम कोन? आरबीसी रो काम होछि फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। सेम टू सेम डब्ल्यूबीसी रो मन रखिबो, डब्ल्यूबीसी रो काम होछि फॉर द इम्यूनिटी रो हम कहि परिया हैला। जेहेतु माने फॉरेन पार्टिकल मारुचंती, सो दैट इम्यूनिटी रो काम भी ओवरऑल डब्ल्यूबीसी रो फंक्शन कहि परिया।
देन नेक्स्ट मन रखिबो न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट गला बासोफिल्स रो काम कोन स्ट्रिक्टली मन रखिबो एटा नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बासोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन बासोफिल्स तीनटा जिंस सीक्रेट करिवो हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन हिस्टामिन टा होचे भासो डायलेटर मन रख हिस्टामिन इज ए भासो डायलेटर काम कोन भासो डायलेटर माने कि ब्लड वेसल जदि कौन सी कज रु सपोज ब्लड वेसल टा कंस्ट्रिक्ट हो जाउची माने कि माने ब्लड वेसल टा नैरो हो जाउची तो ऑब्वियसली जदि ब्लड वेसल नैरो होबो गोटे पाइप टा जदि नैरो हो जिवो तो पाइप देकरी जो फ्लूइड टा जाए तो ऑब्वियसली से फ्लूइड टा कोन होबो प्रेशर पड़ो से फ्लूइड टा से फ्लो रे मूव करि परिबनी सो भासो डायलेटर मीनिंग होची इट विल वाइडनिंग द ब्लड वेसल दैट मीन्स इट विल क्लियर द पाथ ऑफ द ब्लड वेसल जदि ब्लड टा नैरो हो जिवो एटाको वाइडनिंग करिया हेल्प करिवो एंड वेयर इज द सेरोटोनिन इज द वासोकंस्ट्रिक्टर एंड हेपारिन रो काम आमे समस्त जानिचे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेपारिन हु कैन से हेपारिन रो काम कोन हेपारिन रो काम कोन हेपारिन दैट इज हेपारिन रो काम होची कोन हेपारिन रो काम होची दैट इज हम जानिचे मोस्ट इंपोर्टेंट एट हम पढितले ब्लड डू नॉट clot inside the blood vessel due to the presence of heparin blood vessel भितर blood केबे बेले clot करेनी कोन पई ना due to the presence of heparin and if the blood will come out of her body then immediately the blood clotting will take place and blood yes to prevent the blood clot formation in the case of any surgery or virus other medical procedure is Nazarene Arthur so right that is it is a anticoagulant agent and inside the blood vessel blood never clot kain pe clot hueni blood due to the presence of heparin so मन रखिबो बासोफिल सीक्रेट करिवो हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ हेपारिन ऑलरेडी तुम जानिछो हिस्टामिन होची भासो डायलेटर एंड सेरोटोनिन टा होची गोटे भासो कंस्ट्रिक्टर बट बहुत बहुत जगह रे सेरोटोनिन को यूज करा होची बहुत भासो कंस्ट्रिक्टर डायलेटर बट तुम मन रखो भासो कंस्ट्रिक्टर देन देखिया एसिनोफिल्स percent होची 2 to 3% resist the that is resist the infection and allergic reaction infection और allergic reaction रे काम होची eosinophils आ lymphocyte कथा हम कहूची तो तमे कोन मन रखिलो WBC को टू टाइप्स रे डिवाइड कराई छि one is granulocytes and another one is agranulocytes clear granulocytes means छोटा छोटा दाना वाला structure present so that it is called as granulocytes then granulocytes under re neutrophils eosinophils basophils is there agranulocytes under re lymphocyte and monocyte clear and हमें देखिले ऑर्डर समस्त आग होची न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% eosinophils 2 to 3% देन होची बासोफिल्स ओ ऑर्डर कहूनी जस्ट खाली कार कोन परसेंट कहूची 0.5 ରୁ 1% एंड lymphocyte 20 ରୁ 25% एंड मोनोसाइट केते थिला मोनोसाइट आई थिंक ओटे केते थिला एटी हम देखितले 6 ରୁ 8% यस 6 to 8% तो এই ডাটাটা মনে রাখিবা neutrophil 60 to 65% and you have to remember eosinophils is 2 to 3% basophils is 0.5 to 1% eosinophils 20 to 25% sorry lymphocyte 20 to 25% monocyte is 6 to 8% and order ta hochi NLMEB clear and the function of neutrophils and monocyte is phagocytic property and the release of basophils is histamine serotonin heparin histamine is a vasodilator which will widening the blood vessel serotonin vasoconstrictor heparin is anticoagulant agent eosinophils resist infection को अटकेबो and also allergic reaction then होची कोन lymphocyte को आसिया ठीक अछि चलो 6 to 8%
ओके देखो, तो सब लिम्फोसाइट मन रखिबो, लिम्फोसाइट को अगेन डिवाइड करा हैछि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, क्लियर। तो स्ट्रिक्टली मन रखिबो गोटे कथा, बोथ हमर जानिछे लिम्फोसाइट रो काम कोन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करिवो, कोन से यदि फॉरेन पार्टिकल आसीबो ता अगेंस्ट रे फाइट करिवो। जेहेतु डब्ल्यूबीसी रो मैक्सिमम कंपोनेंट that is foreign particle against रे fight करूछथि, so that the overall function of WBC is for the immunity purpose, okay। so strictly मन रखियो both B lymphocyte and T lymphocyte, both B lymphocyte and T lymphocyte are produced in bone marrow, obviously bone marrow, कहीं ना हमें फास्ट क्लास रे पढ़ी आरबीसी हो कि डब्ल्यूबीसी हो कि प्लेटलेट हो, एमाने दैट इज बा जो फॉर्म्ड एलिमेंट रहिले, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, सो दीज आर कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज रे यॉक सैक, देन आफ्टर लिवर, देन आफ्टर द बोन मैरो। सो जेहेतु डब्ल्यूबीसी बोन मैरो प्रोडक्शन होची, तो ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी अंडर रे तो जाउची ना बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, तो अल्टीमेटली बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट are produced from the bone marrow, but strictly मन रखिबो B lymphocyte mature हुए ए तळे ए लिखि दोची, B lymphocyte and T lymphocyte produced होची bone marrow रू, and B lymphocyte mature in bone marrow, whereas T lymphocyte is mature in thymus. These two things are most important. B lymphocyte and T lymphocyte both are produced in the bone marrow, and B lymphocyte is mature in bone marrow, whereas the T lymphocyte is mature in thymus. मन रखियो, yes, both B lymphocyte and T lymphocyte are produced in bone marrow. B lymphocyte is mature in bone marrow, T lymphocyte is mature in thymus. मतलब कि हमें कहि परिया B lymphocyte produced in bone marrow and mature in bone marrow, whereas T lymphocyte is produced bone marrow, mature in thymus. Clear? And आमे समस्त जानि छे where is the bone marrow is located, every bone रो भीतर structure is bone marrow, and where is the thymus is located, यदि हमें thymus देखिया, thymus is present between the breast bone, बा हमर जो breast रहला, तो breast bone रो मझरे रहला होची thymus, नहीं thymus रे T lymphocyte रो maturation हुए, T lymphocyte mature हुए ହେଲା। थाइमस ग्लैंडटा जेतेबेले आमे बेसिकली नॉर्मल जेतेबेले आमे छोटो थिबा, तो सेई टाइम रे साइज लार्ज थाए, बट एडल्ट एज एड के आमे जेतेबेले जीवा बा ओल्ड एज एड के जीवा, तो जनरली द थाइमस ग्लैंडटा डिजेनरेट ही जाए बा छोटो ही जाए हैला। थाइमस ग्लैंडटा डिजेनरेट ही जाए बा स्मॉल साइज ही जाए, दैट इज एडल्ट बा ओल्ड स्टेज बेलको। सो दैट तुम भाबुन जेते जदि जेतेबेले आमे जेतेबेले ओल्ड एज रे पहुंची जे, आम माने जेतेबेले बुढ़ा बुढ़ी हेइ जे, बुढ़ा बुढ़ी जेतेबेले हेइ जे, तो सेतेबेले कोन होबा, हमर थाइमस ग्लैंडटा एते छोटो होई जाइथिबो जहा फळे कि टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन हेइ परिबोनी। एंड आमे जानि छे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट रो काम कोन, आमे गोटे जानने बी लिम्फोसाइट होची एंटीबॉडी प्रोडक्शन करे। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी होची जति दैट इज द प्रोटीन व्हिच इज इंपोर्टेंट फॉर द अटैकिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल। जदि हमर बॉडी भितर कोनसी फॉरेन पार्टिकल आसुची, ता अगेंस्ट रे फाइट करे पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करे कि बी लिम्फोसाइट, बट बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करे। एनसेट रे आउट लाइन लिखा छी, टी लिम्फोसाइट डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, but help the B lymphocyte to produce antibody. You have to remember B lymphocyte and T lymphocyte भितरे B lymphocyte produce antibody and T lymphocyte do not produce any antibody, but help the B lymphocyte to produce antibody. For example, MD Koser and Payal. MD Koser is B lymphocyte and Payal is T lymphocyte. MD Koser will produce the antibody and Payal, it means T lymphocyte, which will help the MD Koser or B lymphocyte to produce the antibody. B lymphocyte T lymphocyte रो काम होइया, so that जेतेबेले हमें ओल्ड स्टेज एड के जीवा, जेहेतु थाइमस ग्लैंड रे T lymphocyte रो मैच्योरेशन हुए हमें जानि छे,
B lymphocyte and T lymphocyte both produced in the bone marrow, whereas the B lymphocyte is mature in the bone marrow and the T lymphocyte will mature in the thymus. So that जेहेतु thymus gland टा degenerate ही small ही आसीबो, so T lymphocyte जो maturation हुए तो obviously problem हबो बा maturation रो defect हबो. तो T lymphocyte जदि भलसे form न होई परिबो बा maturation हेई परिबोनी, automatically it will not help the B lymphocyte. So indirectly B lymphocyte भी antibody production करियर unable हबो. So due to the unable of forming the antibody, तो आम दैट इज इम्यून सिस्टम पूरा डैमेज हो बा डाउन हो तो एटा ही हुए ना. सर प्लीज आपण क्लास थ्योरी करतु. ए फाइट बॉय गेमिंग थ्योरी तो आम करूचे माने तुम कहया चाहूछ कि सर डेली थ्योरी करंतु या एटा थ्योरी नो थ्योरी करंतु. तो मन रखिलो हला बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नहीं जहाँ क्वेश्चन पचर आखि मुजिक करिवो. थाइमस ग्लैंड रो हार्मोन रिलीज हुए दैट इज कॉल्ड एज थाइमोसिन है. बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जेतबेले गोटे लोक एड्स अफेक्टेड हुए आम टे देखा कम्युनिकेबल डिजीज जो डिजीज गुड़ाक स्प्रेड हुए 1% टू अनदर पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज मोस्टली नॉट क्यूरेबल और completely not curable and the name of the disease here that is कौन डिजीज जो माने कि completely curable होतनी. हेपाटाइटिस बी मन रखिबो, हेपाटाइटिस बी, जेनिटल हॉप्स एंड एड्स ये तीनटा डिजीज होची completely curable नुह. मु काहे के कथा एठी कहली मु तुम सेकटा भी कहूची completely curable नुह हला. These diseases are not completely curable. So आमे जानि छे जेतले एड्स it is a viral infection or it is a viral disease, so that the name of the virus is HIV virus. So HIV virus will degrade our helper T cell by it will degradation our T lymphocyte. तो जेतले T lymphocyte number टा पूरा डाउन हो जिवो तो obviously T lymphocyte will not help the B lymphocyte, so ultimately B lymphocyte भी antibody production करिवे and our immunity पूरा डाउन हो and केबे क्यूरेबल नो. हेपाटाइटिस बी मन रखिबा हेपाटाइटिस बी जेनिटल हॉप्स एड्स that is completely curable नुह. So सेति पई both B lymphocyte and T lymphocyte, both B lymphocyte and T lymphocyte are responsible for immune response of our body. Platelet code formation होची. Platelet is otherwise called as thrombocyte. That is are the cell fragment produced from the megakaryocyte cell. Suppose this is the bone marrow and आमे जानि छे RBC, WBC and platelet, all these are formed in the bone marrow information है बुझुछटी सोई पड़नी. सो जेहेतु बोन मैरो फॉर्मेशन हुए ताहले प्लेटलेट भी ऑल्सो बोन मैरो फॉर्मेशन है. तो इनसाइड रे कथा लिखा है कि बोन मैरो भितर गोटे लार्ज सेल अच्छी एंड से लार्ज सेल रो ना होची मेगा कार्योसाइट सेल्स एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर. Platelet are also called as thrombocytes are the cell fragment produced from the megakaryocyte cell, special cell in the bone marrow. बा bone marrow रे गोटे स्पेशल सेल अछि से सेल रो ना होछि मेगा माने बड़ मेगाकार्योसाइट सेल. तो गोटे लार्ज सेल अछि मेगाकार्योसाइट सेल. तो ए बोन मैरो रो मेगाकार्योसाइट सेल रु ही प्लेटलेट फॉर्मेशन होछि. सो दैट तो मेगाकार्योसाइट सेल रो फ्रैगमेंटेशन एट लिखा है सपोज. तो बेसिकली ये जो मेगाकार्य आर द सेल फ्रैगमेंट ए मेगाकार्योसाइट सेल जदि एटा गोटे मेगाकार्योसाइट सेल को हम जूम करले तो आर फ्रैगमेंटेशन आर छोट छोट फ्रैगमेंटेशन गुडा होछि कोन प्लेटलेट. तो यू हैव टू रिमेंबर प्लेटलेट आर द सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट सेल व्हिच इज ए स्पेशल सेल इन द बोन मैरो एंड ब्लड नॉर्मली कंटेन दैट इज 1.5 लाख रु 3.5 लाख हला. आरबीसी काउंट केते 5 रु 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब. WBC होछि 6000 रु 8000 पर मिलीमीटर क्यूब एंड द प्लेटलेट इज 1.5 लाख 15 1.5 लाख हेलानी 1 2 3 4 5 1.5 लाख रु 3.5 लाख प्लेटलेट पर मिलीमीटर क्यूब. ताले मैक्सिमम कोटा
सर पार्ट 2 माने कौन? पार्ट 1 रो नाही एटा कौन थ्योरी क्लास? ऑब्वियसली अछि। तमे विद्यासागर क्लासेस रो यूट्यूब लाइव सेशन को जाओ एंड सेतरे देखो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन रो ऑलरेडी पार्ट 1 हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दिस इज द पार्ट 2 एंड द पार्ट 3 विल इमीडिएटली स्टार्ट। सो डोंट वरी, एवरी पार्ट आसीबो तम पाको तो 1.5 लाख रु 3.5 लाख। तो मैक्सिमम रहिला कोन आरबीसी ना, मिलियन कथा आछी माने आरबीसी अथिया न, तापर बोधे प्लेटलेट आछी, तापर बोधे आसीबो डब्ल्यूबीसी। Next, sir, platelet can release a variety of substance, most of which are involved in the clotting. तो आरबीसी रो काम कोन? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, and the function of WBC is for the immunity, and the function of platelet is for the clotting and coagulation. ब्राली अक्षर जानिछ, एटा लेखिया कोन दरकार? आरबीसी रो फंक्शन होची दैट इज ब्लड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, एंड डब्ल्यूबीसी रो काम होची फॉर द इम्यूनिटी, एंड द प्लेटलेट रो काम होची ब्लड क्लॉटिंग एंड कोagulation. A reduction in the number of can lead the clotting disorder which will lead the excess loss of blood. जेतबेले तमरो प्लेटलेट काउंट कमी जिवो तो ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होबो which will lead the excessive loss of blood from our body हैला। जो कोविड 19 सॉरी कोविड 19 को तो वर्ल्ड कप बेले हे नथला याकू खाओ केलो हमरो जुगराज को न सुमन गिल को हे नथला डेंगू हे नथला। तो डेंगू इज ए वायरल डिजीज एंड व्हाट इज द वेक्टर ऑफ डेंगू? वेक्टर कथा नहीं, डेंगू कथा नहीं कहूची। डेंगू रो वेक्टर होची कोन? दैट इज एडिस मस्किटो, एडिस एजिप्टी। एंड एडिस मस्किटो दिन रे कामुडी, दिन रे मशा कामुडी सोइबो तो जेतो डेंगू हुए नहीं, डेंगू वायरस किए जाना रात दिन रात भूल कथा। डेंगू गोटे रात देखा जाए, एडिस मस्किटो गोटे रात देखा जाए, दिन रे कामुडिबो, रात रे सोइबो दिन रे कामुडिबो। डेंगू वायरस जार वेक्टर होची एडिस एजिप्टी, जी होची तो वेक्टर, सॉरी एई पेने लिखि देली डेंगू वायरस, जोटा कि बेसिकली ए जो मस्किटो रहिलानी तार होची कोन? एडिस एजिप्टी। तो एडिस मस्किटो द्वारा ही व्यापे एंड एथिरे मोस्टली होची प्लेटलेट काउंट कम हो जाए। एंड से कथा हेतिला का कहलो याकू हेतिला सुमन गिल को। हां ए तो एडिस इजिप्ट तो एडिस इजिप्टी जोटा कि डेंगू वायरस मन रखता। तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाए फीमेल एडिस। तो तुमको यदि क्वेश्चन पचरा आसब ना, तापर आस ब्लड ग्रुप। मत फास्ट कह ब्लड ग्रुप किए डिस्कवर करते? हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप किए डिस्कवर करते? हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप? पानी नहीं पानी भी रखा होने ना था तो आने कष्ट करनी। तो कौन हम ब्लड ग्रुप किए डिस्कवर करते? कार्ल लैंडस्टेनर। परफेक्ट। वंडरफुल ना, कार्ल लैंडस्टेनर। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर एंड बेसिकली आम मन केस रे दीटा ब्लड ग्रुप स्टडी करछे, एबीए एंड आरएच। बहुत सारा ब्लड ग्रुपिंग अच्छी, बट आम जस्ट एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग स्टडी करिया। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो देखिबा बेसिकली टोटाल ऊपर जदि हम सब लोक मानु देखिया केतेरा ब्लड ग्रुप आया, फिनोटाइप जो देखिया समस्ती करो। इफ आई विल सी द फिनोटाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप देन आई विल फाउंड दैट इज कौन फिनोटाइप, आइदर ए ब्लड ग्रुप रो पर्सन मिलिबो, और आई विल गेट बी ब्लड ग्रुप पर्सन, और आई विल गेट एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। दैट इज फिनोटाइप के लिए हमें जो देखिबा देयर ओ ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप हैला। तो टोटल ऊपर हमें ए ब्लड ग्रुप आया, बट हमें देखिबा व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ दिस ब्लड ग्रुप, देन हमें देखिबा को ब्लड ग्रुप काहा को ब्लड डोनेट करि परिबो एसो। ओके 4 तो सपोज ए ब्लड ग्रुप,
ए ब्लड ग्रुप जो लोकर हेइथिबो तार जीनोटाइप कोन हेइतै पारे? तो जीनोटाइप ए हेइथिबो आइदर IA और IA स्मॉल आई, एटा हेइतै पारे ना जीनोटाइप। माइन A पॉजिटिव एंड सर आपका एंड मेरा O पॉजिटिव एंड द मोस्ट अबंडेंट ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव. If you will see, maximum persons are having O positive blood group and the rare blood group is O negative, A negative, all these, but abundant blood group is O positive. Then and B blood group, and B blood group जो देखिबा B blood group रो जीनोटाइप कोन हबो? IB small I, O negative is universal donor, perfect. Then AB blood group जो देखिबा genotype is IA IB. Then O blood group, O blood group रे जदि हम देखिबा कोन II बा ताको हम एमती लिखि परिबा I नॉट बट ये लिखो स्मॉल आई. तो टोटल केतरा जीनोटाइप हला 1 2 3 4 5 6. तो आमे जदि ह्यूमन रो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखिया देयर आर 6 जीनोटाइप and 4 phenotype. मन रहइबनी. And what is the null I? तो 6 genotype and 4 phenotype. 6 genotype and 4 phenotype. And if the examiner will ask you what is the ratio of genotype and phenotype of ABO blood group, genotype and phenotype रो simplest ratio कौन होगा? 6/4 3/2. or what is the simplest ratio of phenotype by genotype is? सर ओयूट रो ऑब्जेक्शन की किछि आसिला कि ओयूट रो ऑब्जेक्शन की बा तमर आसी ऑब्जेक्शन की ओयूट रो ऑब्जेक्शन की तो आसी की पळै रहनी बट एबे तो तमरो काली बोधे आसीबा आज 9 तारिख हो गला ना. आई थिंक टुमारो you will get the rank card. I think yes, sorry, percentile will come tomorrow, that means 9th आज आसिला. सॉरी म चेक करनी देन. ओके तो मन रखिबो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. तो ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप एबी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड सब पे नीट रो भी क्वेश्चन पचारे बहुत थर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे पचारछि जो पर्सन रो ए ब्लड ग्रुप हेइतिबो. तो सपोज दिस इज द पर्सन and A blood group I think MD Kosar. So A blood group रो पर्सन रो ब्लड को हम आनिले सपोज एति की ब्लड को आनिले एंड ए ब्लड रो हम आरबीसी को बाहर कले एंड एमडी कोसर रो ब्लड रो हम आरबीसी को बाहर कला परे देखिले ता ब्लड रो आरबीसी रे कोठी कोन अछि. तो नियत रे हमको ए मिलिबो जो माने करे ए ब्लड ग्रुप always antigen present on the surface of RBC. Suppose these are the antigen. Suppose this is the RBC. एटा ब्लड है. ब्लड टाको बॉडी रो बाहर कले एंड ब्लड रो आरबीसी को बाहर कले एंड वी विल फाइंड दैट एंटीजन. दीज आर द एंटीजन. एंटीजन हमको मिलिबो कोठी आरबीसी रो सरफेस रे. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट इन, मोस्ट इंपोर्टेंट पचारछि एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. आरबीसी रो सरफेस रे सबोल पे एंटीजन मिले एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द
प्लाज्मा antibody plasma रे मिले and antigen on the surface of RBC मन रखिथाओ always antigen present on the surface of RBC where is the antibody is present on the plasma clear एठी भी तुम लिखा है देखो blood group A blood group जार हेइतिबो तार antigen is A and antibody is B antigen कोड present antigen on the RBC if the examiner will ask you antigen is present on the surface of RBC antigen is present on the surface of WBC antigen is present on the surface of platelet ताले कौन होगा आंसर always your answer should be antigen present on the surface of RBC ହେଲା मन रहबो तो आ एंटीबॉडी सबल पे प्लाज्मा रे प्रेजेंट थाए सो मन रखिबा and now the time has already changed जदि देखिबा 2015 16 17 18 19 already the time has changed and examiner can ask from every line of NCERT को लाइन रे भी क्वेश्चन पचारि पारे and देखो antigen present on the surface of RBC and antibody present in the plasma it is clearly mentioned here so that तुमको मन रखियार अछि तो ए ब्लड ग्रुप लोक को जेहेतु यूनिवर्सल डोनर किए देखो ब्लड जो डोनेट करा जाए दीटा टाइप टेस्ट करा जाए गोटे तार ब्लड ग्रुप कौन और तार आंटी तार दैट इज आरएच टेस्ट भी करा जाए आरएच फैक्टरटा जो गोटे मंकी रु आसला से मंकी रो ना होची रेसस मंकी सपोज ए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप माने कौन जेहेतु ए ब्लड ग्रुप तार आरबीसी रो सरफेस रे ए एंटीजन थिबो एंड पॉजिटिव अछि माने भाबो कि आ गोटे पॉजिटिव अछि माने नियत रूप रे आ गोटे आरएच एंटीजन प्रेजेंट थिबो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप माने कोन ए नेगेटिव जहा रहितिबो सपोज एटा आरबीसी ताल आरबीसी रो सरफेस रे ए एंटीजन थिबो एंड नेगेटिव माने आरएच फैक्टरटा नथिबो ओ पॉजिटिव रे हम जानि छे एंटीजन कोन से न थाए बट पॉजिटिव माने आरएच फैक्टर थिबो ओ नेगेटिव ओ रो तो एंटीजन नाही सो आरएच फैक्टर भी नथिबो तो एति मन रखो फॉर एग्जांपल जदि गोटे ए ब्लड ग्रुप लोकर एक्सीडेंट हला ताल ताऊ को माने देई परिबे ए वाला देई परिबो एंड आल्सो ओ वाला भी देई परिबो बट मन रखिबो यूनिवर्सल डोनर के यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव and universal recipients के universal recipient is AB positive universal recipients AB positive and universal donor is O negative and the RH factor was discovered from the monkey and the name of the monkey was rhesus monkey मन रखिबो एटा ला AB blood group रो एंटीजन कोन एंटीजन होची both A and B A blood group रो ए ब्लड ग्रुप रो एंटीजन ए एंटीबॉडी बी बा स्मॉल बी लिखले भी चलिबो बी ब्लड ग्रुप रो एंटीजन बी एंटीबॉडी ए डायरेक्ट लिख दोची एंटीबॉडी ए सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप रो एंटीजन ए एंड बी एंटीबॉडी नहीं देन ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन इज एब्सेंट बट एंटीबॉडी बोथ ए एंड बी हैला तो ओ ब्लड ग्रुप रो जदी एक्सीडेंट हो ताको केवल ओ ही दे परिबो जेहेतु ओ टा मोस्ट अबंडेंट तो दे परिबो बट एबी ब्लड ग्रुप जदी यूनिवर्सल डोनर जदी एबी ब्लड कार एक्सीडेंट हेची तो ए दे परिबो बी दे परिबो एबी दे परिबो ओ दे परिबो एंड आरएच ग्रुपिंग रे तुमको मन रखियार अछि कोन ना दैट इज कहली ऑलरेडी द अनदर एंटीजन द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट ऑन द रेसस मंकी रो डिस्कवर कराइछि जो कि आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी रेसस मंकी रो
जो आरबीसी देखागला तो आरबीसी सरफेस रे गोटे ये एंटीजेन मिलला जहाँ जेहेतु गोटे अलग टाइप एंटीजेन मिलला जेहेतु रेसस मंकी ब्लड थिला सो दैट तार से एंटीजेन ना ही दिगला आरएच एंटीजेन आर मीन्स दैट इज रेसस एंड इफ द आरएच एंटीजेन इज प्रेजेंट पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इफ द आरएच नेगेटिव सो नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव माने दैट इज आरएच एंटीजेन प्रेजेंट ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप माने आरएच एंटीजेन एब्सेंट बी पॉजिटिव माने आरएच एंटीजेन प्रेजेंट एंड बी नेगेटिव माने आरएच एंटीजेन एब्सेंट आज ऑनलाइन क्लास कहार अछि कोन अछि केतरे रे 8 ओके आ गोटे मन रखिबो दैट इज कोन एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज बेसिकली कोन हुए ना फॉर एग्जांपल दिस इज द womb of the mother and here a baby is growing and the mother blood group is Rh negative and the fetus blood group जदि पिलाटा जो पेट भीतर डेवलप करछि Rh पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो निहात रूप रे जेतेबेले बेसिकली बेबी रो डेलीवर हबो एट द टाइम ऑफ डेलीवरी और एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन बेसिकली कोन हुए ना Rh नेगेटिव जेहेतु मदर रो Rh नेगेटिव स्ट्रिक्टली मन रखो इट क्लियरली मेंशन कराइछ मदर इज हैविंग द Rh नेगेटिव Rh negative blood of a pregnant mother with Rh positive of fetus. So निहात रूप रे मन रखिबो during the delivery of the first child जेतेबेले डेलीवर होतिबो there is a possibility of exposure of the maternal blood small amount of Rh positive तो जेतेबेले डेलीवर होतिबो चांसेस अछि कोन हुए ना पिलर जो Rh पॉजिटिव ब्लड अछि तो मां रो Rh नेगेटिव ब्लड सो दैट इज एक्सपोजर हेई पारे बा मां रो Rh नेगेटिव ब्लड सो टच अप करि पारे तो निहात रूप तुम भाबो जदि मदर कर अछि Rh नेगेटिव एंड फिटस रो अछि Rh पॉजिटिव तो जेतोले बेसिकली जेतोले प्लासेंटा बा जेतोले हमें कहबा प्लासेंटा को जेतोले कट करा जाउची तो एट दैट टाइम रे कोन हुए ना फिटस रो जो Rh पॉजिटिव ब्लड एक्सपोजर हेई पारे मां रो Rh नेगेटिव सो एंड से टाइम रे कोन होबो ना मां रो बॉडी पई Rh पॉजिटिव इज ए फॉरेन पार्टिकल तो निहात रूप मां बॉडी ता अगेंस्ट कोन करिवो ना एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिवो से बेबी तो डेलीवर हे गला इट्स ओके बट जेतोले नेक्स्ट प्रेगनेंसी आसीबो एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी रे कोन करिवो ना बेसिकली से जो फिटस ता डेवलप होबो नेक्स्ट प्रेगनेंसी रे तो से फिटस रो जदि Rh पॉजिटिव ब्लड हेतिबो तो मदर पाखरे ऑलरेडी Rh पॉजिटिव पई सफिशिएंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन कि थिबो एंड फिटस रो आरबीसी को नष्ट करिवो कि सेकंड बेबी तो क्वेश्चन आदरे पचारे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ए कंडीशन को आजे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बा फोइटालिस एथिरे बेसिकली मदर रो Rh नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड फिटस रो Rh पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी रो पिलार किछि होबनी पिला जन्म नै जिवो बट सेही टाइम रे Rh पॉजिटिव रो ब्लड किछि कोन हुए ना मदर रो Rh नेगेटिव ब्लड सो एक्सपोजर हुए सो दैट द मदर फॉर द मदर Rh पॉजिटिव इज द फॉरेन पार्टिकल सो दैट the blood of the mother will produce large amount of antibody against the Rh positive blood of the fetus and the second baby womb रे बा that is हमर uterus रे develop करिवो at that time second baby रो erythroblast बा हमर जोटा कहतला हमें RBC forming cell बा erythroblast को fetus रो erythroblast को नष्ट करिवो जहा फल रे कि second baby रे severe jaundice हेई पारे and severe baby भी and fetus could cause the severe anemia और जॉन्डिस तार आरबीसी डेफिशिएंसी हेई पारे एंड सीवियर जॉन्डिस हेई पारे मे बी पिलारे भी डेथ भी हेई पारे सो निहात रे ऊपर जदी जो माने हम ए वीडियो देखुचो सो इफ ए गर्ल इज हैविंग द नेगेटिव ब्लड ग्रुप बिफोर द प्रेगनेंसी और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड 9 टू 9 मास 10 दिन भितरे सो इमीडिएटली डॉक्टर को कहि दवा दरकार कि नर्स को कहि दवा दरकार कि सर और मैम आई एम हैविंग द नेगेटिव ब्लड ग्रुप सो दैट डॉक्टर तुमको कहीदेवे कि यू आर हैविंग नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड जदि तुमर पेट भितर जो बेबी डेवलप होची तार जदि पॉजिटिव ब्लड होइतो ताले ई बडा कंडीशन हेई पारे तो तुमको लाइफ रे गोटे ही पिला करियर अछि अदरवाइज तुमको गोटे इंजेक्शन दबार अछि इम्यूनोग्लोबिन नामक इंजेक्शन जोठी कि दैट इज पिलर डेलीवरी होबार किछि जो पूर्व दिया जाय एंड आल्सो जन्म होबार परे परे विदिन 24 आवर्स या 12 आवर्स भीतर इंजेक्शन दिया जिवो जो इंजेक्शन ता कोन करिवो जदि भी Rh पॉजिटिव ब्लड ता फिटस रो मदर Rh नेगेटिव सो जाइथिबो तो इमीडिएटली Rh पॉजिटिव ब्लड को नष्ट कर दबो
तो निहाती रूप से जो फीमेल मानकर जदि नेगेटिव ब्लड ग्रुप अछि तो से माने डॉक्टर मानकू पूर्वरु कहिदवा दरकार कि आई एम हैविंग द नेगेटिव ब्लड ग्रुप सो दैट से माने तुमको इंस्ट्रक्शन देबे कि जेहेतु तुमर नेगेटिव ब्लड ग्रुप अछि एंड जदि तुमर पेट भितर जो बिलाटा डेभलप करूची बेबीर नेगेटिव हेले किसी प्रोब्लेम होबनी तो एटा मन रखिता होला तो एतिक हम पढ़िले याकू नहीं आग एमसीक्यू करिया देन तापर हम नेक्स्ट क्लास रे एटा पढ़िया ठीक अछि तो 10 मिनिट रे एमसीक्यू टा कर दबा 1 सेकंड रुओ गोटे सेकंड गोटे मिनिट रुओ क्वेश्चन टा टिके कर दबा एटा देखा जाउनी ना किछि देखा होनी ना এই যেটা गोटे मिनिट पचार दवा क्वेश्चन तो करे दरकार पचार दवा टाइम वेस्ट ओके अच्छा कुह कि lymphocyte forms how much percentage of WBC देखा जाउन रे ओ देखा देखा रे परफेक्ट 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 बढ़िया अछि ओके फास्ट क्वेश्चन कोटा एट किन बैक करियो कोला ठीक 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 এটা সেকেন্ডটা না ওকে তাহলে এটা ফার্স্টটা এটা না সরি এটা ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଏଇଟା ବୋଧେ
ठीक ठीक बस को एबे द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट आरबीसी आरबीसी को नेकी ट्रू स्टेटमेंट को तापर करिया द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट आरबीसी RBC have an average lifespan of 120 days. Then that is RBC are destroyed in the spleen. Then RBC are devoid of nucleus. Now all of the above. Which of the following statement is true? Obviously all of this true. I think it I am correct. Next hello. Leukocytes are known as WBC as they are colorless due to presence of nucleus, lack of hemoglobin. Now white pigment present in them. Now all of this. Kon above. Why leukocytes are colorless or also known as WBC? Kon pen? Most important cause कौन ड्यू टू द लैक ऑफ हिमोग्लोबिन जोटा कि आरबीसी रे आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बा हिमोग्लोबिन थिबा कारण द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड whereas due to the lack of hemoglobin in WBC the color of WBC is colorless. You have to remember and answer is C. The next question 14. Basophils will release histamine, serotonin, heparin, all of this. कौन basophils will release serotonin, heparin. Answer कौन होगा? That is all of this. Perfect. And what is the function of heparin? जानिचो कि vasoconstrictor कि vasodilator भी जानिचो. And what is the meaning of vasoconstrictor, vasodilator? Already you have an idea. Which of the following is an associated with the allergic reaction? Allergic reaction ପାଇଁ କାହାର କାମ? Neutrophils, monocyte, eosinophils, lymphocyte. Which of the following option is important? Or which of the following option is associated with the allergic reaction? I think the answer is zoom होनी वा रहुनी. Answer कौन होगा? Which of the following is associated with allergic reaction? Eosinophils. मन पड़ची एनसेट रे directly पढ़िले eosinophils which is important for the allergic reaction as well as resist infection. So answer is C. Then question number 16. Which of the following is an incorrect statement about the leukocyte? Leukocyte or WBC को लेके कोटा incorrect. They are nucleated. They are approximately in average of 6,000 to 8,000 millimeter cube. Two main types are found in their granulocytes and agranulocytes. Monocyte are most abundant. कोटा भितर incorrect. सबुबेले पे क्वेश्चन कला बेले स्ट्रिक्टली पढ़िबो एग्जामिनर कोन पचारछि करेक्ट या इनकरेक्ट करेक्ट पचारछि तो इनकरेक्ट देखि मारथिबो. आंसर कोन हबो? रिमझिम, अंकिता, गीतांजलि. परफेक्ट. आंसर इज मोनोसाइट. मोनोसाइट तो मोस्ट abundant नो. मोस्ट abundant किए? Who can say which WBC is abundant? Neutrophils, monocyte, eosinophils. Most abundant कोटा? Neutrophils. जोटा हम देखिथिले NLM EB Newton's law of motion. eosinophils, basophils. Neutrophils, lymphocyte, monocyte, eosinophils, basophils. The most abundant हबा कथा neutrophils. And मतलब को what is the function of neutrophils and monocyte? Neutrophils and monocyte ର କାମ କ'ଣ? Phagocytic property. What is the function of eosinophils? Resist infection and allergic reaction. What is the function of basophils? Which will release the histamine, serotonin and heparin. And among the B lymphocyte and T lymphocyte, which will produce the antibody and which will help the B lymphocyte to produce antibody. B lymphocyte और T lymphocyte भितर किए antibody production करे help करिवो and किए antibody production करिवो. को B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte will produce the antibody, whereas the T lymphocyte will help the B lymphocyte to produce the antibody. Yes, perfect. And B lymphocyte and T lymphocyte. Where is the maturation site of B lymphocyte and where is the maturation site of T lymphocyte? B lymphocyte will mature in the bone marrow, where is the T lymphocyte will mature in the thymus. Perfect. चलो next question चलो. Question number 17.
Leukocyte are also, oh sorry, lymphocyte forms how much percentage of WBC? WBC रे केते परसेंट होची lymphocyte? 20 to 25, 6 to 8, 60 to 65, 2 to 3% तो eosinophils, 60 to 65 तो neutrophils, and monocyte I think 6 to 8%. The answer is lymphocyte 20 to 25. Perfect. 18 number aso. Which of the following cells are responsible for the immune response of the body? Body रे immune response ପାଇଁ କୋଉ cell responsible? B lymphocyte, T lymphocyte, both A and B, na astrocyte. को astrocyte is the cell which is present in the brain and which will act just like a blood brain barrier. The answer कौन हबो को 18 number. Answer is both A and A, B. Perfect. Next चलो. Platelet are cell fragment of megakaryocyte cell 1.5 to 3.5 plus 1.5 lakh ରୁ 3.5 lakh per millimeter cube मिले blood रे, also called as thrombocyte. All of these platelet को नेकी which one is correct? तो केबे भी हेले एग्जाम रे करेक्ट इनकरेक्ट सब पढ़िबो, न पढ़ी के तेरे घर को आसीबो देन भूल भाल करके आसीबो कि एग्जामिनर तुमको पचारथिबो करेक्ट एंड तमे इनकरेक्ट देखि मारथिबो, देन आसी घरे भाबियो कि दैट इज आई हैड टू रीड द क्वेश्चन, मते क्वेश्चन पढ़ियार थिला, तो निहात रूपरे असुविधा. तो प्लेटलेट आर ऑल ऑफ दिस हम जानि छे 1.5 लाख ରୁ 3.5 लाख एंड सेल फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकार्योसाइट्स, इट इज ए स्पेशल सेल प्रेजेंट इन द प्लेटलेट also called as thrombocyte. Clear? Next chalo, ABO blood group is based on how many antigen present or absent of WBC. केते antigen present or absent को नेकरी WBC को ग्रुपिज्म कराउछ को 2. Okay, chalo next, select the correct statement. Surface of antigen or RBC always induce the autoimmune disease. Correct statement. Blood grouping ABO is an example of multiple allelism. Now AB blood group is a universal recipient as well as donor. Now 4 phenotype blood group are possible and 5 genotype blood group are possible. What answer? Surface of antigen or RBC blood group is an example of multiple allelism. Go. गोटे तुम अच्छी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर पढ़ो जो क्लीयरली लिखाई मल्टीपल एलिलिज आम जाने गोटे जीन रे दैट इज 2 एलिली थाए, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर वन इज रिसेसिव, बट यहाँ गोटे मल्टीपल एलिलिज एग्जांपल जेहेतु एबी ब्लड ग्रुप आसूची तो निहाती रूप से तुम भाव गोटे पॉपुलेशन स्टडी कला बेले तुमको बहुत सारा एलिली मिलिबो. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल मल्टीपल एलिलिज्म एग्जांपल होची ह्यूमन रो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. And ABO blood group universal nuho and 6 genotype haba katha. Next, a patient with blood group A was injured in an accident and has lost a lot of blood during the injury. And then which blood group the donor, which blood group the doctor should effectively used? Doctor को blood group use करे दरकार. Then answer कौन होगा? And the person was I think A blood group. A blood group person was injured. And answer is A and O. As you know that O is the universal donor and person is A blood, so that A blood group is important. How many people are RH positive in the human population? Human population RH positive केते? एटी के बाहर क्वेश्चन कही होबनी केते परसेंट RH positive. %80. ओके ताल ठीक था बोधे 80% हो. RH incompatibility in the first pregnancy occurs when? First pregnancy रे RH incompatibility रे हबो केतेबेले fetus when the fetal organ completely develop during the delivery केतेबेले that is RH incompatibility हबो first pregnancy रे during the delivery of the first child ना never occur in the first pregnancy ना केतेबेले हबो
B option is right. During the delivery of the baby, as you know that fetus, if the fetus is having the blood group Rh positive, and if the mother is having the blood group Rh negative, and in that case during the delivery of the first child, there is a possibility of entry of Rh positive of the fetus to the mother, so that second pregnancy रे erythroblastosis fetalis condition hobo. Okay, next 25. Erythroblastosis fetalis, HDN, RH incompatibility, both A and B. कितना क्लास 8 10टा. Then कौन होगा आंसर? Erythroblastosis fetalis, both A and B. Yes, both A and B. HDN माने homeolytic disease in the newborn. जो तरीके गोटे blood disorder हुए, so that homeolytic disease in the newborn. Homeolytic disease in the newborn, that is newborn case रे गोटे blood related disorder हुए, तो निहाती रूप से जेहेतु newborn blood related disorder, तो आम कहि परिया both A and B. 25C, homeolytic disorder in newborn. Okay, there is a vertical transmission of Rh antibody from the mother to the fetus because there are dash type of antibody. Mother रे को type of antibody? को आंसर? आम जानिचे मदर प्लासेंटा कौन हुए, दैट इज IgG. देन आम जानिचे मिल्क रे IgA, एलर्जिक रिएक्शन रे IgE. IgE टा होचे एलर्जिक रिएक्शन केस रे देखा जिवो. देन IgE होचे मदर रो कोलेस्ट्रॉल, जो मिल्क रो कोलेस्ट्रॉल. देन ब्लड क्लटिंग तो आम पढ़ीने. सो एतिकी होचे हमर थिला क्वेश्चन डिस्कशन. एंड हमर जो माने ऑनलाइन बैच रे एनरोल करछंती, तो सेमानकर आई थिंक 8 रे क्लास हबो ऑनलाइन क्लास. एंड ऑनलाइन क्लास जहाँ भी विद्यासागर क्लासेस प्रोवाइड कराउची, सेम टू सेम एक प्रोजेक्टर ही प्रोवाइड कराउची. जूम रे तुम जॉइन करियो, बट प्रोजेक्टर देखियो एंड स्ट्रिक्टली ए टाइप रे ही पढ़ा होची ऑनलाइन रे. एंड नियत रूप रे जो माने ऑनलाइन पे इंटरेस्टेड, सो दैट यू कैन कांटेक्ट. एंड आल्सो ऑफलाइन रे ऑलरेडी हमर गोटे बैच फुल हे गलोनी, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन आवर ऑफलाइन बैच, सो दैट जो माने ऑफलाइन बैच भी इंटरेस्टेड अछन, तो नियत रूप रे नंबर जो तळे देछि से नंबर रे कांटेक्ट करो एंड ऑफलाइन बैच रे दैट इज एनरोल करो जदि इंटरेस्ट अच्छी भलसे पढ़िया पे. सर ऑडियो वीडियो ऑन रहेगा? यस, 100%. You can see the teacher and also you can ask the every questions and every doubt, and all the teachers will solve every type of problem, so that तमे online रे जहाँ भी facility YouTube रे कौन, that is you can only chat, but online classes रे तमे unmute करिकी टीचर के सह that is conversation करि परिबो. also that is तमे strictly जहाँ पचारि परिबो, वीडियो रे भी देखि परिबो everything. बट ऑफलाइन क्लास रे तो तुम जानिछो, सो दैट जो भी आई एम नॉट फोर्सिंग एवरीवन. सो जी भी अच्छो, सो दैट जदि कार इंटरेस्ट थिबो ऑफलाइन हो किबा ऑनलाइन हो, देन तुम जॉइन कर परियो. थैंक यू. चलो चलो रेस्ट नियो. एंड तुमरा जो माने अच्छो ऑनलाइन बैच रे पेड सीट रे अच्छो, सो दैट से मानकर तो 8 ରୁ 10ଟା क्लास हो. एंड जो माने यूट्यूब रे अच्छो ओनली, तो से माने जाओ पढ़ा पढ़ी करो भलसे. एंड नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो ब्लड क्लटिंग रो स्टार्ट करवा, एंड ट्राई करिया नेक्स्ट क्लास रे टिके स्पीड बढ़ेगी एटा को चैप्टर को सारिया. थैंक यू. वॉइस ऑफ कृष्णा, मिताली, स्नेहामयी, नाजरीन, अंकिता, एमडी कौशर, पायल, सोनालिसा. ओके, तो चलो एबे रहिले. यस, श्रेया, चंदन, थैंक यू एवरीवन. शुभस्मिता, चलो शुभांशी. यस, अभिस्मिता, रिमझिम,